Good afternoon, students. So, today we are starting our chapter number 2, Principles of Management. This is the second part of our management. In this chapter, we will study about the principles of management, that what is the meaning of principle and what are the principles of management, and about the nature of principles of management. After that, we will study about the Henry Fewell's principles of management. सो फर्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग हेयर कि इस चैप्टर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ अ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज़ अ फंडामेंटल. सबसे पहले मीनिंग क्या होता है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल कुछ फंडामेंटल ट्रूथ है दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम और बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग. क्योंकि किसी सिस्टम में जिन फंडामेंटल ट्रूथ को हम फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स, राइट? Like principles of management are broad and they are general guidelines for managerial decision making and behavior. के principles जनरल गाइडलाइंस होती है जिनके बेस पे मैनेजर डिसीजन लेते हैं, ठीक है. एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिच्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस. They are concerned with human behavior and thus are to be applied creatively given the demand of सिचुएशन. कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस के प्रिंसिपल की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं. वो कैसे होते हैं? वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं और अगर सिचुएशंस में चेंज हो तो मैनेजमेंट अपने प्रिंसिपल्स में भी चेंज कर लेता है, ठीक है. दैट मीन्स दे आर द जनरल गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन एंड बिहेवियर. की हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाती है, ठीक है. तो गाइडलाइंस जो किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए इम्पॉर्टेंट हो वो क्या है? हमारे प्रिंसिपल्स है. जैसे आपको पता है कि आप 10 डेज रेगुलरली अगर स्कूल में एब्सेंट हो जाएं तो क्या हो जाता है? आपका नेम स्टक ऑफ हो जाता है रजिस्टर से. दैट इज़ अ प्रिंसिपल, ठीक है. इसी तरह सर्टन गाइडलाइंस फंडामेंटल ट्रूथ विच आर हेल्पफुल फॉर taking managerial decision are called principles, right? I think now you all will understand the meaning of principles. Now nature of principles of management. अब ये टेबल से आपको नेचर शो रहा है प्रिंसिपल का. फर्स्ट वन, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, प्रैक्टिस एंड experimentation, flexible, behavioral, cause and effect relationship, and now last is contingent. Now we are describing these points. First point is written that it is universal application. That means the principle of management is applicable in all type of organization, whether they are business, whether they are small scale business, large scale business. So in every organization principle of management is applicable. कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, चाहे वो बड़ा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, वेदर इट इज़ any type of business. So it is applicable in all type of business, so that means it is of universal applicability, ठीक है. कि business principle हर जगह अप्लाई होते हैं. Next one is journal guidelines. They are journal guidelines to of actions but it do not provide straight solution of all managerial problem. कि ये सिर्फ हमारी जनरल गाइडलाइंस है किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए. ये डायरेक्टली आपको स्ट्रेट कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है. सोल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम एज द बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक. क्योंकि बिजनेस जो हमारी सिचुएशंस है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है आजकल, डायनेमिक है, चेंजेबल भी है. सो दीज आर ओनली जनरल गाइडलाइंस. Next one is formed by practice and experimentation. That means all the principles of management are formed from the knowledge, experience एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ मैनेजर्स. कि जितने भी प्रिंसिपल बनाए हैं ये बाकी के सभी जो मैनेजर थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट से और नॉलेज से बनाए हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. दैट दीज प्रिंसिपल आर नॉट रिस्ड
not static. We can make changes in this according to change in situation. So these principles are not rigid and can be adapted and modified by the practicing manager depending upon the situation. That means we can make changes in our principle. They are not rigid in nature. ठीक है, आप अपने प्रिंसिपल्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हो, वो रिजिड नहीं है. नेक्स्ट वन इज मेनली बिहेवियर. Since the principle aim at influencing complex human behavior, these are behavioral in nature. कि जो आपकी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो मेनली बिहेवियर है, जो ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं कि आप ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई करोगे, चेंज करोगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. दे आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. कि मेनली जो आप इम्प्लीमेंट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दे आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश, उनका मेन मोटिव है टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशन. ठीक है. लास्ट वन इज कॉन्टीजेंट. देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन at a particular time of period of time, point of time, the application has to be changed as per situation. कि time के accordingly आप उसकी applicability भी change करते हो. They are contingent in nature. ठीक है. So these about the features of our principles of management. Now here we are discussing Henry Fayol's principles of management. We have two types of principles: Taylor's scientific management and Henry Fayol's principle of management. ठीक है. And today we are discussing Fayol's principle of management. These principles are given by Henry Fayol. So according to Henry Fayol, specialization promote efficiency to the workforce and increase productivity. In addition, the specialization of the workforce increases their accuracy and speed. So this 14 principle of management is applicable in both technical and managerial activities. That means in short these principles are given by Henry Fayol and these principles are applicable on both type of organization, whether it is a technical organization or it is a managerial activities. कि हमारे जो फ्यूल के principles हैं ये दोनों टाइप के टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में भी, टेक्निकल एक्टिविटीज़ के लिए भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं और मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए भी. सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. लुक हियर. Our first principle is division of work, right? So according to this principle, the entire work of an organization is divided into small tasks, small job, and then each part is assigned to a worker according to his ability, and that worker become efficient in performing the task. If the worker is doing that task again and again, he becomes specialized in that task and the speed of that worker increases, and this leads to greater efficiency, specialization and increase in productivity, right? कि अगर आप division of work क्या है, if you are dividing the whole task of every organization into smaller task, कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के टोटल वर्क को आप छोटी छोटी टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और आप हर टास्क एक पर्सन को करने को देते हैं. द डिवीजन ऑफ वर्क डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ पर्सन. आप किस पर्सन को कौन सा काम दे रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन. एंड इफ़ द पर्सन परफॉर्म द सेम टास्क अगेन एंड अगेन, अगर वो वर्कर वही वर्क दोबारा दोबारा करता रहेगा, इट लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी. He gets specialization in that job and in this way it increases the productivity of firm. एक वर्कर को अगर आप एक ही टाइप का काम करने को दोगे तो वो अपने वर्क में स्पेशलाइज हो जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर वर्कर्स, एंड इसका बेनिफिट फर्म को रिसीव होगा, राइट? सो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क. नाउ second one is authority and relationship responsibility. Authority means power to take decision and responsibility means
obligation to complete the work assigned to on time. That means authority, what the authority means, it means power to take decision. That means if you are giving power to take decision to anyone, you have to give responsibility of also. That means that person is also obligated to complete the job assigned on time. There should be balance, always balance between authority and responsibility, because no authority without any responsibility and excuses executive and less interested in discharging duties. Similarly, if you are giving authority without assigning responsibility, then makes him arrogant and there is a fear of misuse of power. That means authority and responsibility both go side by side. Right? Next is discipline. It is an obligation of every organizational rules and employment agreement which necessary for the working of organization. It is required to maintain a discipline in the organization. Discipline require means it requires good supervision at all levels and clear and fair agreement and justice application of penalty. So this is about third principle of management, that is discipline, that everyone must maintain a discipline in an organization by making rules and employment agreements. Thank you.